निफ्टी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका नाम है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। इज दिस इंडेक्स मेंट फॉर यू? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर इस इंडेक्स को लॉन्च करा क्यों गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया in order to support its Make in India initiative. And secondly, the government has the vision to transfer to electric vehicle mobility, 30% electric vehicle mobility by 2030, as well as convert all of the new electric vehicle sales to 80% by 2040. This nifty new launch is going to support that initiative too. सेकेंडली जानते हैं कि इंडिया के अंदर ईवी का इकोसिस्टम कैसा लगता है। किसी भी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्चुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स, सेकेंडली द इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशंस, एंड thirdly the capital availability. So first of all, our sales in electric vehicles in 2024 in FY 2024 were 1.6 million units, यानी कि 16 lakh units. सेकेंडली, इंडिया के अंदर PLI ऑटो स्कीम के थ्रू 25,000 करोड़ का कैपिटल आउटले किया गया था इन 2021, which was supposed to be given to companies over the 5 years. Thirdly, इंडिया में 12,000 चार्जिंग स्टेशंस लॉन्च हो गए हैं, ऑपरेशनल है, जहां पर महाराष्ट्र इज लीडिंग द पैक. The index is going to have 33 stocks and the rebalancing of these stocks is going to be done on a semi-annual basis. इस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, companies supplying raw materials to EV, electric vehicle, battery component manufacturers, and finally, autonomous technologies as well. The top 5 constituents of this index will be Bajaj Auto, Tata Motors, Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki, and Exide Industries. Should you be buying this index or not? सबसे पहले तो अपनी किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लीजिए वेदर इक्विटी इन्वेस्टिंग इज देयर फॉर यू और नॉट. सो यू नीड टू एनालाइज योर फाइनेंशियल गोल्स, योर रिस्क एपेटाइट, योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, द टेन्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर, एंड देन ओनली कंसिडर इक्विटी एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल. इफ एट ऑल इक्विटी इज suitable for you, make sure that you analyze the constituents as well. Do a fundamental and technical analysis, understand the financial strength of the company's valuation as well as the momentum of all of these stocks. If you are not able to do all of this, approach your financial advisor. Do let us know and we can have a detailed analysis on your financial goals, risk appetite, return expectations, and decide whether this index is genuinely for you or not. I personally stay out of index investing because while index investing can give you exposure to a lot of your favorite stocks or a complete index, but it also has the con that index investing does not have any active advisory. There is no fund manager who is going to understand or identify problematic stocks where there could be management problems or where order fulfillments are not there, and potentially the dragging down of these stocks could lead to dragging down of your portfolio as well. We hope and do believe that you liked our content. Do let us know on what other financially relevant content you would want us to talk about. We will keep on seeing you on more. Till then, this is Shalini Gera signing off. Bye-bye.